Good evening, everyone, and welcome to After Hours with William on India. So, as we discussed in the morning, it was a bit tough start for the week. Nifty gapped lower, and in the opening hour itself, there was some sharp selling, and Nifty breached the 18,200 level. What we discussed in the morning was the 10 EMA level and the levels nearby. So 200 to 250, 18,200 to 250 was the zone that was giving a very good support to Nifty. बट क्या हुआ ओपनिंग आवर्स में वो ब्रीच हो गया एंड वहां से फिर निफ्टी नेवर केम अबाउट दैट 18,200 लेवल फॉर द फुल डे. यहाँ जब एक बार ब्रीच हुआ इट ट्राइड यहाँ पे 2-3 बार ट्राई किया, ठीक है, बट वो 18,200 के ऊपर वापस निफ्टी जा नहीं पाया. So that's how sometimes the level works. So 200 to 250 was a very good support zone. After breaching it, now it becomes the zone of resistance. Now what you need to look for is the Nifty to move above that level. That is very crucial. So I think after that first hour sell off, so you can see this is the 5-minute chart. So there was no major swings. So though there was a very high intraday volatility, ठीक है, 2-3 बार ये 150 से रिबाउंड होके फिर से 90 तक जाने का ट्राई किया, फिर 36 तक गया, फिर 70 का ट्राई किया, ठीक है. सो देयर वाज अ zigzag मूवमेंट ड्यूरिंग द डे, बट 125 से नीचे नहीं गया, 200 से ऊपर नहीं गया दिन भर, ठीक है. नाउ ऑन द डाउन साइड इफ यू कैन सी, ऑन द अप साइड आई टोल्ड यू अभी 200 से 250, तो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट क्या लेगा. So Avi, now that becomes the resistance zone. So now that 10 EMA is very important to reclaim. On the flip side, this green line, that is the 21 EMA and DMA level. So वो 18,000, 18,050 की range में है दोनों. So that becomes the next level of support for the Nifty. Now, from the O'Neill viewpoint, if you can see, today volume bar is not over here, but if I draw it, then today's volume was higher than the Friday's session and loss was more than 0.2%. So today's session will be considered as the distribution day. And this is the first distribution day. तो निफ्टी अप ट्रेंड में गया था नवंबर 11 को, ठीक है, नवंबर 11 को निफ्टी अप ट्रेंड में गया था. उसके बाद आज 21 नवंबर को पहला डिस्ट्रीब्यूशन डे आ गया है. तो क्या हुआ था कि लास्ट थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन निफ्टी 0.2% से ज्यादा गिरा था, पर वॉल्यूम प्रीवियस सेशन से कम हुआ करता था, उसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन डे क्वालिफाई नहीं हुआ. बट आज वॉल्यूम फ्राइडेज के सेशन से ज्यादा था, इसलिए today's session will be considered as the first distribution day. Now, one distribution day is not a major problem, but when you see the distribution day increases and that also you get it in the same week, वो एक क्लस्टरिंग होता है ना, ठीक है, जैसे क्लस्टरिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है, जब भी फॉल से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन डे का क्लस्टरिंग हो जाता है, यहाँ पे सब जगह हुआ था, तो वहां पे एक मेजर प्रॉब्लम आता है. एक डिस्ट्रीब्यूशन डे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यही वीक में दो और आ जाते हैं और निफ्टी 18,000 ब्रीच कर जाती है, जो ग्रीन लाइन है 21 डीएमए है, ठीक है, उसके नीचे आ जाती है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अदरवाइज 1 or 2 डिस्ट्रीब्यूशन डे and if Nifty is above 21 DMA is manageable. So now, if I conclude, नीचे की साइड 18,000, ऊपर की साइड 250. So these are the two levels you need to watch out for. जिस भी साइड ब्रेकअप ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, so that's the area where you should focus on. If you see today's top gainers and losers, and yes, the oil marketing companies, crude oil काफी 87-88 लेवल तक आ गया. मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था. So BPCL was among the top gainer today, more than 2%. Then there was Airtel, Axis Bank and IndusInd gaining 1 to 2%, and Hindustan Unilever was up around 0.74%. On the flip side, there was a mix in the selling. Adani Port was down 2%, then Tech Mahindra, Hero MotoCorp and Hindalco, as well as the Reliance. All were down around 2%, adding pressure on Nifty. So if you look on the sectorial front, Nifty Bank was down 0.2%. Auto, IT में major problem था. IT की वजह से Nifty गया. Metals, yes, this was the point.
तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि जब इंपोर्ट ड्यूटी लगा था तब सारे मेटल स्टॉक 8-10-15% बढ़े थे, मेटल इंडेक्स 3-4% बढ़ा था रफली। बट आज ऐसा क्यों नहीं हुआ जब इंपोर्ट ड्यूटी हटाएगी? सो दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग दैट डोंट जस्ट रश इन द मॉर्निंग फॉर द मेटल स्टॉक्स, बिकॉज जो प्राइसिंग डिफरेंस है उस टाइम का सिचुएशन सिनेरियो अलग था। अभी डोमेस्टिक में ऑलरेडी प्राइस हाई है। अगर आप ओवरसीज मार्केट से कंपेयर करें तो उनको एज अ मार्जिन फ्रंट पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। यस, लॉन्ग टर्म सेंटिमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ के वाइज मार्केट खुल गया, ये अच्छी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। बट जो स्पॉट ऑन वो इम्पैक्ट आना चाहिए ना, वो वाली बात नहीं थी। वो उस पे मिक्स ट्रेंड था, उसकी वजह से मेटल गोट a bit 8.8% down. Yes, here was the pocket of strength. PSU बैंक was the pocket of strength. सारे PSU बैंक 4-5%, 10% से ज्यादा ऊपर थे। रियलिटी स्टॉक में काफी सेलिंग था, 1.3% लॉस के साथ बंद हुआ। So overall, the trend was negative. Some mix, some pocket of strength, mainly the PSU banks. If you look at the key news, not something major, like Arvind and Purfi Global formed a joint venture, and Ahluwalia Construction bagged the order of around 120 crore from the Assam government. Then Bharati Airtel launched its 5G service in Guwahati. So every day these news are coming. So gradually in India, the 5G services are getting launched. Then ADSL bagged order of 207 crore in JV with KEC from Punjab Municipal Corporation. And Star Health's October gross direct premium rose 11.6% YOY to 957 crore. If you look at the chart of the day, so today we have RCF, Rashtra Chemical Fertilizer, as the chart of the day. If you can see the fundamentals, it has been very good. The return on equity is 18%. अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का देखें, अर्निंग्स बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ इज डिसेंट, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फंड होल्डिंग्स, लुक एट दिस, एक नोटेबल इंक्रीज है, 94 फंड्स होल्ड कर रहा है, 16% ग्रो किया है वो। बाकी EPS strength of 96, so 99 is the highest. So the RCF is having one of the highest EPS strength. And what I like about this, the other thing is the technicals. देखिए buyer demand, so buyer demand is of A. सो व्हेनेवर यू सी कि जैसे कि अभी पिछले 3-4 दिन से स्टॉक गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो वॉल्यूम देखे कितना लो था। अभी आज बढ़ा तो हाई वॉल्यूम पे बढ़ा, बीच में भी एक दिन बढ़ा था तो वॉल्यूम ऊपर था, उसके पहले ऑन दिस डे तो वॉल्यूम वाज हायर। सो जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, देयर इज सम गुड मोमेंटम कमिंग, बायर आ रहे हैं तो वॉल्यूम इज हायर। और जब भी थोड़ा सेलिंग हो रहा है 3-4-5% का, तब कोई मेजर इतना सेलिंग नहीं हो रहा है। So that is something positive. One thing to see over here is the RS rating. थोड़ा weak है comparatively 65. But if you look the RS line, so gradually अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से वो ऊपर ही जा रहा है. And I think once you get near the pivot, so as if it's forming the right side of the base, it's 9% to pivot. अगर pivot के पास आ जाता है, high volume पे breakout देता है, then I think RS can comfortably cross that 75-80 mark. And again it may form a blue dot जो कि 52 week high RS length हो जाता है। तो probability है अगर यहाँ पे high volume पे buying आता है, so what you need to observe over here is the कि ऊपर कितना जा रहा है और कितना वॉल्यूम से जा रहा है। अगर ये पिवट के पास आ गया, ब्रेकआउट हो गया और वॉल्यूम हाई है, ये 9-10% के मूव में, then that is something very positive. Otherwise it's forming a base on base structure, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेज 2 कंसोलिडेशन बेस बना, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ और अभी स्टेज 2B बेस बन रहा है। And this base is not breached the lows of this base, so that is something positive. And that's why if you see that the stock is moving about the pivot, then you can consider it according to your prudence and your financial advisor's advice to, in the ideal buy zone. So ideal buy zone 0 to 5% hota hai. So like 112.65 is the breakout point और वहां से 5%, so roughly 117 तक का जोन बन जाता है इसमें।
and it's in a very good shape. So like the demand is good, the margin increase. अभी इस बार का last week ही result आया था for RCF and result was very good. The profit growth, revenue growth, इनका margin क्योंकि generally 6-7% में रहता है, so 7.5 के around roughly इसका margin था, so उसमें भी improvement हुआ. अगर YOY आप compare करें तो margin में भी improvement हुआ. So that's something good about this stock. So fundamental growth story as well as the technicals are in place for the stock. So need to watch out this 9% move and then the breakout and see how the technical ratings gets improved during that phase. So that's it for today's session. See you again at 8:45 a.m. tomorrow in the morning. Thank you.